हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। We extend a very warm and hearty welcome to Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji. Our Honorable Chief Guest, His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana. Our Honorable Special Guest of Honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname. We also extend a very warm welcome to Honorable Governor of Madhya Pradesh, Shri Mangubhai Patel, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, and Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. We also welcome Honorable Ministers of State for Foreign Affairs, Honorable Shri V. Muralidharan, Honorable Srimati Meenakshi Lekhi, and Honorable Dr. Rajkumar Ranjan Singh. प्रवासी भारतीयों की भारत से दूरी भले ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर की होगी, पर भारत उनके दिल से दूर नहीं, जो दूर रहकर भी भारत बदलाव की सूरजमुखी यात्रा के भागीदार हैं, जो विश्व में भारत का प्रतिबिंब हैं, जिनका गर्व आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वासी न्यू इंडिया के विश्व में महकती सुगंध है। May I now request Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to kindly deliver welcome address. कृपया स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गयाना के राष्ट्रपति और पीबीडी के चीफ गेस्ट एक्सेलेंसी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के राष्ट्रपति और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर एक्सेलेंसी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्रीगण, डेलीगेट्स, साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। इंदौर में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। ये कन्वेंशन एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो भारतीय समुदाय के साथ हमारे रिश्तों को और गहरा करता है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीबीडी के 3 मकसद हैं। हमारी ये बॉन्डिंग को लगातार रिफ्रेश करना, दूसरा इसको नई ऊर्जा देना और तीसरा उनमें ज़्यादा पहलुओं को लाना। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के विजन और मार्गदर्शन से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी's leadership, India will surely emerge as a leading power. And along with that, the global standing of those with Indian heritage will also grow. And so too will the importance of the Pravasi Bhartiya Divas. We will deliberate on all that and more over the next 2 days. But right now, I welcome you all to the 17th Pravasi Bhartiya Divas and sincerely thank all those who made the holding of this convention in Indore possible. Jai Hind. Thank you, Honorable Dr. S. Jaishankar. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्थापित भारत विकास के आदर्शों को आत्मसात कर
माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी कर्मठता से मध्य प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान से कि कृपया अपनी भावनाएं व्यक्त करें। हमारे लाडले नेता, भारत के प्रधानमंत्री, आप सबके दिलों पर राज करने वाले आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय राष्ट्रपति रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, आदरणीय श्री जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री आदरणीय बी मुरलीधरन जी, मीनाक्षी लेखी जी, मंत्रिमंडल के सदस्य आदरणीय डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, और दुनिया भर से पधारे हुए मेरे प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों, एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सबने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबने भी मध्य प्रदेश में कल गहरी रुचि जताई है। आर्थिक शक्ति, ज्ञान की शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति हमारा भारत बने, इसके लिए आप सबके अलग अलग प्रपोजल और प्रस्ताव भी है। मैं तो आज केवल इतना कह सकता हूं, और ये मैं कह रहा हूं तो केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, भारत के एक नागरिक के नाते, कि 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता
एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के युद्ध नहीं, शांति चाहिए। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे बच्चे कैसे निकले? प्रधानमंत्री जी ने 4-4 मंत्री सीमाओं पर भेजे, लेकिन हमारे छात्रों ने, विद्यार्थी बेटा बेटियों ने हाथ में तिरंगा लिया और आगे बढ़ गए, तो रूस की फौजें भी रुक गई और यूक्रेन भी ठिठक गया। भारत का तिरंगा लेके वो सुरक्षित निकाल के आ गए। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण की राह दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, हम सबका संकल्प है कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ के कई मामलों में देश का नेतृत्व करे। एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माफी चाहता हूं। हाल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं है। फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। Today we feel deeply honored with the gracious presence of our distinguished and esteemed guests on the dais. May I now request our guest of honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname, to kindly address on the occasion. धन्यवाद, नमस्कार, आप सब लोग के लिए नमस्कार। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Minister of External Affairs, Dr. Jaishankar, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, President of the Cooperative Republic of Guyana, my brother, Dr. Mohammed Irfan Ali, distinguished ministers, distinguished ladies and gentlemen. Good morning. नमस्कार। महोदय, भारत की प्रधानमंत्री, आपको हृदय से मेरा नमस्कार और प्रणाम। First, let me offer also my heartfelt condolences to you, Prime Minister, and I'm doing that with this text. Janani janma bhumishta swarga dapi gari yasi. एक माँ और एक मातृभूमि स्वर्ग से भी भरकर है। Today is my great privilege to set foot on the soil of mesmerizing Indore, the largest city in beautiful Madhya Pradesh, known as the cleanest city in India, and evolving as one of the smart cities to speak as your special guest of honor at this August Pravasi Divas. Allow me also, on behalf of the people and the government of the Republic of Suriname, to express to the government of India and the government of Madhya Pradesh our sincerest gratitude for the warm hospitality rendered to me and my delegation. Ladies and gentlemen, this convention is a great momentum for new opportunities to explore for both our nations
in the so-called Amrit Kal of New India, which was introduced by Prime Minister Narendra Modi in 2021, which we support. With the projected 25 years of sustainability should not only be spread to all areas and places in India, but it should also get outreach to our diaspora nations and our diaspora people, and that is also one of the reasons why we are gathered here today. Prime Minister Modi, how can we support your philosophical vision of Amrit Kal and this Pravasi Divas to our diaspora nations and to all our people of Indian descent? I believe that this concept needs to be developed, promoted, and institutionalized in our nations and among our people. Therefore, today, I'm presenting you some ideas for further consideration. For example, for the Caribbean diaspora, an Indian diaspora institution can be established in the Caribbean region for training in Hindi language, training in culture, etc. An academy in the Caribbean for supporting of film industry, where the talented diaspora youth can get the opportunity to showcase their talent, training in yoga, Ayurveda, and spirituality as a way of life. To enable this, a diaspora fund should be created for the diaspora projects and programs in the region. Also, founding of training centers, schools in different areas and places of our countries should be initiated to learn the Hindi language, our bhasha, but also learning about our religions and culture and our parampara, our tradition. The establishment of a Caribbean high-tech training institution in modern technology should be welcomed for the diaspora nations to support the IT skills among our citizens. My country, Suriname, is willing to host one of those institutions. Ladies and gentlemen, recently we initiated the idea to establish an innovation hub for the youth of the Caribbean for science studies, studying climate change and biodiversity, which can be integrated and applied in this IT institution. Another proposal is investing in companies creating semi-finished products where Indian companies can develop and produce products in our own region to strengthen the local communities and economy. This will develop and support our own local industry, local content. For example, instead of only importing logs from our country, wood furniture can be produced also locally based on the win-win principle. A regional enterprise for pharmaceuticals to produce affordable medicines for our people in the region, and also developing renewable energies in the diaspora nations that should be supported and expanded for the energy security. Another idea is the establishment of Indian financial institutions and banks for ease of doing business and trade in our region that will support financial inclusion of our business community and the people, but also to see this as a solution of financial exclusion by the threat of de-risking of several banks in the Caribbean nations by foreign banks, but also promotion of South-South cooperation, promoting connectivity through air and water connections for our nations, and creating and expanding joint markets for each other's products, and promoting movements of persons and goods through water and air connectivity. Supporting and promoting programs for the use of high technology by India for communication, education, and access to information to support knowledge and strengthen the human well-being for everyone in the community
in our region. Ladies and gentlemen, very often, and you witness it every day, we are informed about the role and position of Indians in top companies of the world, in the health sector, in all modern medical institutions, IT world, and also the financial sector. The question is how we can benefit more from this wealth of knowledge and expertise in the diaspora community. Ladies and gentlemen, those are some thoughts. I see many opportunities for even a closer diaspora cooperation with Indian counterparts in all areas for the next 25 years. And I make use of this opportunity to invite all relevant actors from both sides to sit around the table and explore the new avenues of cooperation. Even on the highest levels of government, we should have more interactions and strategic dialogue to support and implement the vision of Amrit Kaal. Prime Minister Modi, my country, Suriname, is honored to mark the 150th anniversary of Indian arrival in Suriname in 2023, a significant milestone in the long and rich history of relations between our two countries. This is a memorable occasion. It's a time to celebrate the cultural ties forged between Suriname and India over the past 150 years and to reflect on how our two nations have worked together to promote understanding, cooperation, and mutual respect. The arrival of the immigrants from India and their progressive involvement in the Surinamese society has contributed and enriching cultural expressions and experiences. But they managed to keep their values, their dharma, and their identity, their pahichan. It is crucial to nurture these historical and cultural bonds and look ahead and chart a path towards broader economic and trade engagements and increased investment between our nations. With this in mind, it's now time that we benefit from a more mature type of diaspora cooperation, one that is also based on spiritual principles to eradicate poverty and also consciousness where real wealth is held. Despite the immense challenges of climate change, energy transition, and food security, we have to resolve all these challenges that we face as quickly as we can and with joint effort and commitment. We already have a solid partnership with many areas of cooperation, and with the relevant Indian authorities will undoubtedly advance the objectives of an enhanced and strategic partnership. Excellencies, friends, ladies and gentlemen, I'm aware of the fact that all crises and challenges can be faced. I see possibilities and opportunities. India has proven to be a reliable partner in regional and global matters. I express our appreciation that we'll have the opportunity to advance the voices of the Global South during the upcoming South Summit. In closing, ladies and gentlemen, I am coming back to the theme of this event, Diaspora, Reliable Partner for India's Progress in Amrit Kaal. I wish to remark that this is a very timely and opportune theme. I view Amrit Kaal as the beginning of a new era, starting now, the first month in 2023. The nectar is now available after many years of hardships faced by our ancestors. But only when we work towards our goals of sustainability with sincerity and smartness, this mission is accomplished. Prime Minister Modi, your leadership and vision for the G20 expressed by the theme, One Planet, One Family, One Future, is fully embedded in the philosophy, namely
Vasudevam Kutumbakam Mahurbavam Janeyayam Jaivyam Janam. The world is one family. Human life is defined. Thank you. Dhanyabad. May the Almighty bless you. Thank you very much. Thank you so much, His Excellency. Ladies and gentlemen, we feel honored to invite our chief guest, His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana. May I request you, sir, to kindly address the august gathering. Thank you very much. Minister Sri Narendra Modi, my distinguished brother, President Santoki, distinguished ministers, Chief Minister of Madhya Pradesh, distinguished ladies and gentlemen. I'm delighted to be here once again in the Republic of India, the birthplace of my ancestors, and a country which afforded me the opportunity, to pursue higher education. India belongs to all of us. I want to take this opportunity also to thank the Chief Minister, the government, and the people of Madhya Pradesh for your kind hospitality, your love, and the way in which you welcome us to this beautiful city. I thank the Prime Minister of India for his invitation extended to me to participate in this convention. I express my appreciation for the warm and gracious hospitality extended to me and the members of my delegation, the largest private sector delegation to ever visit India from Guyana. Today is a significant day in the history of India, for it was on the 9th of January 1915, Mohandas Karamchand Gandhi returned home to India from South Africa. It was on this day, 107 years ago, that the once physically frail-looking but morally firm and formidable man returned and intensified the struggle for India's independence. India's independence was an inspiration for freedom-seeking peoples around the world. It ignited their hopes and aspirations of freedom and a better future for them and their progeny. India has used the fruits of its independence to assist other developing countries. And on this point, Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. I stand here very proud of your work, very proud of your love, and very proud of your demonstration of what real love and hope should look like. I take this opportunity to express once again my profound appreciation for India's support to Guyana. Since the establishment of diplomatic relations between our two states,
Guyana has benefited from robust cooperation with India in the fields of agriculture, culture, diplomacy, education, health, housing, information communications technology, infrastructural development, investment, renewable energy, sport, trade, and water. Today, Guyana pursues similar ideals like Prime Minister Sri Narendra Modi. As President, I find commonality in the philosophy, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, which is bringing everyone together, pursuing growth and development, and winning and building trust for everyone. This is the path that marries unity with prosperity, good governance with strong leadership that you are demonstrating. As our country expands, we embrace fully the Rainbow of India concept, which builds the country among the themes of Sanskriti, Krishti, Mahela Shakti, Prakriti, Sansadan, Yuva Shakti, Loktandra, and Gan, which is ensuring our country is built on the strength of its culture, agriculture, women, natural resources, youth power, democracy, and knowledge. India is a world leader in developing Pratibha talent and utilizing Prododiki technology, and we look forward to further collaborating in these two areas. With the development of talent and the sharing of technology, India stands way ahead of all others in developing a world that is hopeful, a world in which technology is not seen as an expensive tool, but technology is seen as an accessible tool to improve all of humanity. Guyana has also keenly observed India's management of relations with its diaspora. We have learned from India as we embark on a new chapter of enhancing our engagement with our own diaspora, which, like India, is scattered across the globe in almost every country. I believe that it is important that we continuously share our experiences in engaging with our respective diasporas. This convention serves such beneficial purpose. Today, I want to therefore share my perspective about diaspora relations. My country, Guyana, is a multi-ethnic society. Indians, whose ancestors first came to work in Guyana as indentured immigrants, constitute the largest ethnic group in the country. Guyana itself has a large diaspora, which is ranked as one of the largest in the world in terms of its share of the national population. One recent report suggested that almost 40% of all Guyanese live overseas. The traditional approach to diaspora relations tended to emphasize remigration, remittances, and family-based tourism. The results of this approach were mixed. Without doubt, remittances have contributed to providing economic support for thousands of Guyanese families. We also were able to attract skilled persons to return and provide the country with much-needed critical skills to rebuild the economy, to restore international creditworthiness, and to establish enterprises. But pull factors including family ties and better opportunities also led to many of them returning overseas. Guyana is now a much stronger economy than it has ever been. It is now the fastest growing economy in the world, registering a real GDP growth of 19.9% in 2021 and growth for 2022 estimated at more than 50%.
On this note, Prime Minister Sri Narendra Modi, I assure you that the economic opportunity, growth, and potential of Guyana is open to the entire private sector of India to participate fully and to be involved in the transformation that is taking place. The country's economy is now in a full takeoff mode of development. This transformative stage of economic development is spawning massive economic opportunities across almost all sectors of the economy. Our intention is to position Guyana to be among the leaders in the world in energy security, climate security, food security, fresh water, and a full-scale human resource development that provides the best health and educational services, and India is an important strategic partner in achieving all of this. Guyana is mindful of the experience of other countries, which have experienced rapid growth, but also led to socioeconomic inequalities. As such, we have embraced a One Guyana agenda, which promotes greater unity and shared prosperity amongst all of our people. Our diaspora is integral to the One Guyana agenda. As such, Guyana is now embracing a diaspora integration model. This flows from our belief that diasporas should not be treated as entities that are peripheral to nationhood. Diasporas are an integral part of our nation. They may be resident outside of our borders, but they remain within our nation. They are part of us and not apart from us. As such, it is necessary when crafting policies that we seek to integrate our diaspora into the process of national development. Policies, therefore, should be tailored to make our diasporas integral rather than incidental to nationhood. My experience has been that members of our diaspora are no less patriotic and no less fervent in their support of country. They celebrate when the national teams do well. Their hearts swell with pride when their countrymen excel and attain high office. And they are passionate in supporting their motherland. I have little doubt that this too is India's experience. Guyana, like India, is a multicultural society with different religious and ethnic groups. The celebration by the diaspora of the religious, cultural, and national festivals and events serve to reinforce the strong connection to homeland and their sense of national identity. The forging of a strong sense of national identity within the diaspora is therefore central to the model of diaspora relations that we are pursuing. One of the ways in which the diaspora reinforces national identity is by keeping alive their cultural and national traditions. These traditions promote a sense of oneness. Relations with our diaspora cannot ignore the role of religious, ethnic, and national traditions in sustaining our multicultural and national identities. Policies which promote the continued observances of religious, cultural, and national observances within the diaspora must become part of our engagement with the diaspora. If the diaspora is to become more integral in national development, it must benefit from accurate and updated information. We now live in an information age where information is now more easily accessible. But the very platforms which may make such information more accessible and more instantaneous can become sources of disinformation. It is therefore essential to establish platforms for the provision of accurate and timely delivery of information to the members of the diaspora.
and to counteract misinformation. We are also keen to transform the brain drain into brain gain. The technology now exists to also tap into our highly skilled diaspora. The diaspora possesses the skills and expertise that are needed for the modernization of our economy. We hope to be able to use ICT to be able to make greater use of the wealth of skills available within the diaspora, including in providing educational and health services. The diaspora integration model also embraces a role of our diaspora as an instrument of soft power. Many members of our diaspora have done exceedingly well in their adopted homelands and have risen to positions of prominence. Collectively, the size and strength of our diaspora in some developed countries attribute great influence to them. Many of the members of our diaspora are strategically placed in positions of influence to help protect and promote our national interests overseas. We look to our diaspora to project our external interests, including to protect our democracy and to defend our territorial integrity and sovereignty, particularly from external threats. We look to our diaspora to champion international causes which are germane to our national interests, including arresting climate change. Indeed, we also look to our diaspora to wield its influence in attracting and unlocking markets for our products. Our experience dictates the diaspora policies should not be cast in stone. They must remain flexible and adaptable to changing realities. The realities in my country are changing, and we have adopted a new approach to diaspora relations, one that is consistent with our goals and aspirations. Our experience have also led us to underscore the importance of exchanging ideas about diaspora relations, and equally about creating strong diaspora networks and improving links between such networks. Before I close, Prime Minister Sri Narendra Modi, distance may be keeping us apart, but our heart and soul connects us through faith and hope. You visited Guyana even before you were Chief Minister, and you felt the love of the Guyanese diaspora. I visited and I studied here even before I became president, and I felt the love of the Indian people. We pray and hope that before the end of this year, we will have the good fortune of your visit to Guyana, so that we can share with you our development aspirations and the hope of a country that is so connected to you and the people of India. I therefore see the Pravasi Divas Convention as an important platform for not only exchanging ideas on this subject, but also fostering deeper and stronger ties among states which have significant diasporas, such as Indian Guyana. I wish every success to this convention. It has been my absolute pleasure to be here and to address you. And before I close, Prime Minister Sri Narendra Modi, on behalf of the government and people of India, of Guyana, and I'm sure of India too, we want you to know that our love and support is with you and your family during this difficult period in losing your mother. You have once again demonstrated to the world the importance of motherhood through your love, your commitment, your dedication, and your honor as a good son.
May God bless you and may God bless all of us. I thank you. Thank you so much, His Excellency. Thank you so much. The Ministry of External Affairs has launched a campaign, Surakshit Jaye, Prashikshit Jaye, Go Safe, Go Trained, to promote safe and legal migration as well as overseas career prospects, जिसका मकसद है जागरूकता की मशाल जलाना कि सुरक्षित और लीगल चैनल के जरिए अगर कोई एस्पिरेंट जॉब के लिए ओवरसीज ट्रैवल कर रहा है और वो वेल इन्फॉर्म्ड भी है तो वो बिना किसी जोखिम के सुरक्षित और प्रोडक्टिव रूप से विदेश में रह सकता है। इसी बात पर बल दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक पोस्टेज स्टैम्प। May I now request Honorable Prime Minister of India and His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali and His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi to kindly release the commemorative postage stamp with the tagline Surakshit Jaye, Prashikshit Jaye, Go Safe, Go Trained. Thank you, sir. Thank you, His Excellencies. आज हर वो व्यक्ति जो भारत की जड़ों से जुड़ा है वो एक उजियारे विश्वास से भरा है, चाहे वो भारतवासी हो, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो या वो भारतवंशी हो। भारत की आज जो विश्व में धाक और साख है उससे 21वीं सदी का भारत मानो विश्व मानचित्र पर जगमगाता सा अलग ही नजर आ रहा है और इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, जिनकी हर सांस में भारत का स्वाभिमान स्पंदित होता है। May I invite the Prime Minister of the largest democracy in the world, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, to kindly address the gathering, kindly guide us and show us the way forward. गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विश्व भर से पधारे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को 2023 की मंगल कामनाएं। करीब 4 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय
अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का आध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहाँ के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहाँ के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, दिस प्रवासी भारतीय दिवस is special in many ways. We celebrated 75 years of India's independence just a few months ago. Our digital exhibition related to our freedom struggle has been organized here. It brings the glorious era in front of you again. Friends, the nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years.
Our Pravasi Bhartiya have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती है, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं। भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। फ्रेंड्स, योर रोल as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people
who will address the world's desire to know more about India. Today, the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity. It is important to understand why I'm saying this. साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। इसी तरह जब कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है, फिनटेक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर हैरात में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। जो स्पेस के फ्यूचर की बात होती है, तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है। भारत एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है। आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है। भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य, भारत का ये दमखम, भारत की जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी। और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी, उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थ्य के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे। मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगति की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
साथियों, आप सबको ये भी पता है, इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। इस दौरान विश्व के विभिन्न देश भारत के जन जन के मन में अतिथि देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे। आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा। साथियों, और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब G20 समिट में, क्योंकि कोई 200 मीटिंग होने वाली है, G20 समूह के 200 डेलीगेशन यहां आने वाले हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं। वापस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतीय उनको बुलाएं, भारत में गए थे तो कैसा रहा, उनके अनुभव सुने। मैं समझता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए अवसर बन जाएगा। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है, और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हैं। हमारे नेक्स्ट जनरेशन युवा जो विदेश में जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, हम उन्हें भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अवसर दे रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को न केवल देश के बारे में गहराई से बताएं, बल्कि उन्हें भारत दिखाएं भी। पारंपरिक बोध और आधुनिक नजर के साथ ये युवा फ्यूचर वर्ल्ड को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से बता पाएंगे। जितनी युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, उतना ही भारत से जुड़ा पर्यटन बढ़ेगा, भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। ये युवा भारत के विभिन्न पर्वों के दौरान, प्रसिद्ध मेलों के दौरान आ सकते हैं, या फिर बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट का लाभ उठा सकते हैं। वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों में भी जुड़ सकते हैं। साथियों, मेरा एक और सुझाव है। कई देशों में भारत से प्रवासी कई सदियों से जाकर बसे हैं।
भारतीय प्रवासियों ने वहां के राष्ट्र के निर्माण में अपने असाधारण योगदान दिए हैं। हमें इनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हमारे कई बुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमोरीज होगी। मेरा आग्रह है कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर देश में हमारे डायस्पोरा के हिस्ट्री पर ऑडियो, वीडियो या लिखित डॉक्यूमेंटेशन के प्रयास किए जाएं। साथियों, कोई भी राष्ट्र उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहता है। यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया। यानी आप जहां रहते हैं, भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज भारत का ये कमिटमेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। मैं गयाना के राष्ट्रपति जी और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जितनी बातें आज हमारे सामने रखी है वे वाकई बहुत उपयोगी हैं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं जिन सुझावों को उन्होंने रखा है उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा। मैं गयाना जी के राष्ट्रपति जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साझा की, क्योंकि जब मैं गयाना गया तो मैं कुछ भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इस समारोह में आए, बीच के गैप के बाद मिलने का मौका मिला है। मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत लोगों से मिलना होगा, बहुत लोग चीजें जानने को मिलेगी, जिसे लेकर के उन स्मृतियों को लेकर के फिर अपने कार्य क्षेत्र में लौटेंगे, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुड़ाव का एक नया युग शुरू होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अपनेपन से भरे हुए संबोधन के लिए। आपके राष्ट्रीय स्वाभिमान के स्वर सभी को एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय। We are grateful and privileged with the august presence of His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali and His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi. Thank you, Honorable Governor, Madhya Pradesh. Thank you, Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh. Thank you so much, Minister of External Affairs, Minister of State for External Affairs. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग खड़े हुए हैं, कृपया जो यहाँ पर जो बीच वाले पैसेज पे खड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कृपया आप लोग बैठ जाइए प्लीज। We extend a very warm and hearty welcome to distinguished dignitaries, our guest of honor,
माननीय विदेश मंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। We extend a very warm welcome to Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports Shri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports Shri Nitish Pramanik ji. We have on the dais Dr. Asaf Said, Secretary CPV and OIA, Ministry of External Affairs, and Ms. Meeta Rajiv Lochan, Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports, to whom we extend a very warm welcome. And of course, we have our guest of honor, Ms. Janita Mascarenhas, Honorable Member of Parliament, Australia, to whom I extend a very warm welcome. मंच पर सम्माननीय माननीय मेहमानों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। देश से जुड़े युवाओं पर गर्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और युवाओं का आह्वान करने वाले नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है, जिनके भारत गर्व से भरे शिकागो भाषण ने सारे विश्व को हतप्रभ कर दिया था, इसी गर्व भावना से भरे हुए हमारे युवाओं का, यंग प्रवासी भारतीयों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। एंड यस इंडीड, द यंग इंडियंस लिविंग ओवरसीज आर फुल ऑफ zest in स्वागत करते हैं। एंड यस इंडीड, द यंग इंडियंस लिविंग ओवरसीज आर फुल ऑफ zest and zeal to be the part of the विकास यात्रा ऑफ न्यू इंडिया, द सागा ऑफ न्यू इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। In India, we begin any auspicious occasion with the lighting of the lamp. कहते हैं इससे देवताओं का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं साथ जुड़ जाती हैं, माहौल ईश्वरीय हो जाता है, रूहानी हो जाता है। May I request Honorable Member of Parliament Australia, Ms. Janita Mascarenhas, Honorable External Affairs Minister, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports to kindly light the ceremonial lamp to begin this auspicious occasion. There is an ancient prayer in the Indian culture, Asato ma sadgamaya, tamuso ma jyotirgamaya, which means lead me from unreal to real, from the darkness of ignorance to the light of knowledge and wisdom. स्वामी विवेकानंद ने कहा था युवाओं से, अराइज अवेक, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो, जागो, चलो, तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महाकवयित्री महादेवी वर्मा की ये कविता अर्पित इस दीपक को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सम्माननीय हमारे मेहमान। May I now invite Dr. Asaf Said, Secretary CPV and OIA, Ministry of External Affairs, to welcome the dignitaries and the delegates by rendering welcome address. Honorable External Affairs Minister, Dr. S. Jayashankar ji,
Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, respected guest of honor, Ms. Zenita Mascarenhas, Member of Parliament, Australia, distinguished members of the Indian diaspora, Excellencies, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. It gives me great pleasure to welcome all of you to the celebration of Youth Pravasi Bhartiya Divas as part of the 17th Pravasi Bhartiya Divas convention in this beautiful city and clean city of Indore. I would like to take this opportunity to also extend a warm welcome to the diaspora youth participants of the 63rd and 64th Know India program who are amidst us today. The PBD convention has special significance as this year, 2023, marks the 75th year of India's independence, which we have been commemorating as the Azadi Ka Amrit Mahotsav with great zeal and vigor. This PBD would also be the first convention in the Amrit Kal, the period encompassing the next quarter of a century, culminating in India at 2047, when our country would complete 100 years of its independence. PBD is perhaps the biggest congregation of its kind for the diaspora anywhere in the world. It is not only a celebration of our strong ties with the overseas Indian community, but also an indication of the importance we assign to remain connected with our diaspora. We believe that as our nation marches towards the goal of becoming a developed nation and a major global power by 2047, our diaspora, particularly the youth, will play a very important role in our national development agenda and in guiding our foreign policy. Keeping in view our Prime Minister's vision of building an Atmanirbhar Bharat over the next 25 years, the theme of this PBD convention has been chosen as Diaspora Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal. During the course of the next 3 days, we intend to deliberate on how we could encourage further participation of the diaspora in India's growth story, especially in view of the emerging changes ushered in by demographic shifts, technological innovations, widespread use of artificial intelligence, concept of remote working, gender mainstreaming, transition to green energy, and changes in the policy landscape of many countries. We begin the celebrations today with the Youth PBD, focusing on the youth, both from India as well as from the diaspora communities. Our youth has been at the forefront in making a global impact through their dynamism and creativity, particularly through the use of technology in various innovative ways. India is home to the world's largest youth population, with a number exceeding over 370 million in the year 2021. India certainly has a distinct demographic advantage in the form of its youth bulge, and I strongly believe that our youth can be instrumental in propelling growth and development as we look ahead at a new and resilient India. I am confident that today's plenary session, role of diaspora youth in innovations and new technologies, will help in brainstorming of ideas and providing us with insightful perspectives from various stakeholders. Let me conclude by thanking all of you for joining us today. I express my deep sense of gratitude to the government of Madhya Pradesh under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan ji for its unflinching support while partnering with MEA to this PBD convention. I also thank all the officials of the Ministry of Youth and Sports for organizing the Youth PBD. Thank you very much. Thank you, Dr. Saeed. हमारे बीच पॉपुलर यूथ आइकॉन बन चुके ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मौजूद हैं. विथ हिज इंस्पायरिंग डायनामिज्म एंड डेडिकेशन, ऑनरेबल श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी एनर्जाइजेस द यूथ टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग. आपसे हमारा आग्रह है माननीय कि कृपया जोश और उत्साह से भरे इन युवाओं को संबोधित करें. Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Minister of State for Home Affairs, Youth and Sports, Shri Nisit Pramanik ji,
And our guest of honor for today's program, Member of Parliament from Australia, Ms. Zaneta Mascarenhas, Dr. Asif Saeed ji, Mrs. Meeta ji, ministers from the Government of India, ministers from the Madhya Pradesh government, elected representatives, my dear brothers and sisters, friends from media, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो सभी प्रवासी भारतीयों का अपने ही देश भारत में और भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार नहीं 6 बार लगातार इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर, द क्लीनेस्ट सिटी चुना गया है और ये सरकार और समाज दोनों के सहयोग से ही हो पाया है। मैं बहुत बार इंदौर आया, स्वच्छ तो बहुत बार देखा, प्रवासी भारतीय आए तो इतना सुंदर बनाने का काम भी और इसको 4 चांद लगाने का काम भी यहां पर हुआ है। मुझे आशा है कि आपका ये प्रवास बहुत अच्छा रहेगा। लेट मी अगेन वेलकम यू ऑल टू द युवा प्रवासी भारतीय दिवस। We all have gathered here today to mark the day when the most iconic Bhartiya Pravasi, a lawyer, a social activist, a visionary, a writer, a nationalist, and a statesman par excellence, one whom we recognize as the father of the nation, Shri Mahatma Gandhi, had returned back to India from South Africa almost over a century, 108 years ago. और 108 का महत्व तो हिंदू समाज में बहुत बड़ा है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन 108 साल पहले महात्मा गांधी इसी धरती पर वापस आए थे। एंड आई टेक ग्रेट प्राइड इन एड्रेसिंग एंड वेलकम यू ऑल टू इंडिया। इंडिया इज अ लैंड ऑफ thousands of years of civilizational history, spirituality which gave the world shunya, and one which is today emerging as the spotlight for the world in software, space technology, and socially adopted landmark digital transformations. India is 1/6 of the humanity. In other words, 1 in every 6 person in the world is an Indian. Our youth is 60% of the population. In fact, you would be surprised to note that the median age of Indian diaspora in many countries around the world is less than that of other foreign-born and immigration populations there, making Indian diaspora youth a sizable force in several countries to reckon with. The Indian diaspora is hardworking and are go-getters in their fields. Your spirit is unparalleled and unflinching. Your achievements are tale of triumphs against the odds in a foreign land. Indian origin people have displayed pragmatism, determination to prove their worth, and found solution to some of the most pressing problems on the planet. Needless to say that some of the brightest minds of Indian origin have played a strategic role, and especially in the success of tech powerhouses across the globe with their unparalleled innovation and infinite talent. The list of Indian origin CEOs is endless. Similar is the list of Indian origin political leaders across the world. But despite the distance of sand, seas and shores, there is something that binds us all. Something special in our heart that skips a beat every time we connect with India. Be it through food, music, movies, trade or travel, I would like to point out here that the Indian diaspora youth have some unique and special qualities that are worth underscoring. They are actually inclined to pursue higher educational qualifications and climbing up professional ladders in their countries of domicile, even as they pursue their dreams and embrace their new country as their new homes. Indianness beats in their heart. आप चाहे उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, अपने सपनों को साकार करने के लिए दूसरे देश में पसीना बहा रहे हो, लेकिन आपके दिल में भारत बसता है और भारत के लिए आपका दिल धड़कता है।
The concept and theme of Youth Pravasi Divas is rooted in the Vasudev Kutumbakam, a phrase which embodies the essence of peaceful coexistence where the whole world is one family. Friends, today India's rising global role and presidency of G20 revolves around this very theme of one earth, one family, one future under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Let me pause here and ask you if you have noticed Prime Minister Modi ji's previous address to the diaspora began with the phrase, Mere Pyare Deshvasiyo. Do you know why? It is so that you are all reminded that no matter where you are in the world, India loves you, respects you and is proud of your achievement. आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, तो मोदी जी ने मेरे प्यारे भारतवासियों इसीलिए कहा कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, कुछ भी उपलब्धियां हासिल कर रहे हों, ये याद करवाता है कि भारत तुम्हें प्यार करता है, सम्मान करता है और आपकी उपलब्धियों पर गर्व करता है. Over the next 3 days, we will recognize, celebrate your journey and envision our hopes for India at Amrit Call, that is India at 100. You will witness invigorating dialogues, plenary sessions on pressing and pertinent subjects and cultural programs. We will also commemorate the valuable contribution of the exemplary Indians spread all over the world like seeds of hope and affirmative action. A unique digital exhibition is on display showcasing the contribution of overseas Indians in India's historic freedom struggle, wherein each one of you will be able to walk through and soak in breathtaking sights of our land has to offer. Further, I am happy to state our government has changed the attitude towards Indian diaspora. The honor and respect that our diaspora deserves is reflected through the importance we give towards ensuring engagements involving them during our official visits and beyond. In recent years, a range of policies have been launched by the Government of India to harness the energy and ideas of our diaspora Indians and connect them to India's youth, and with India's own youthful demographic success story. These initiatives include the Know India program to expose diaspora Indian youth to various aspects of contemporary India and its vibrant art, heritage and culture. The scholarship program Gyan, which is a global initiative of academic network. The Vajra faculty scheme, which aims to bring a strong international connect to the R&D ecosystems to India. The Mission Shodh Ganga, Global Alliance for New Generation Acceleration, Scholarship Program for Diaspora Children, and Indian Technical and Economic Cooperation. Our efforts to link up and facilitate ties between the Indian startups and young diaspora innovators and investors based in their countries of domicile are also generating cross-pollination of ideas. Our vision in the Government of India is to see a two-way flow of ideas and capital between India's own rising youth and their diaspora counterparts from around the world. Moving on, the 96th edition of the Mann Ki Baat, the last and final of 2022, Honorable Prime Minister Modi spoke about how in 2022, India completed 75 years of her independence, and this is very year Amrit Kal commenced. The Prime Minister highlighted that 2022 was the year when the entire country gained a momentum despite the looming threat of COVID, rising geopolitical tensions and shaky global macroeconomic indicators. India came together to outperform other major economies on various fronts. This past year, India attained the status of world's 5th largest economy. हम जिन्होंने हमारे पर 200 वर्ष राज किया, इस बार उनको पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम किया है. और युवाओं के बीच में तो मैं
शिवराज जी, जयशंकर जी, ये कहना चाहता हूं, ये भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। यह दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आकर्षक एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस दुनिया भर में होती हैं। अगर मैं इंडिया के यूपीआई भीम प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक ही महीने में होना और 12,82,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस होना, ये दुनिया में सबसे बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर हुई तो यूपीआई भीम भारत ने करके दिखाया, जो विकसित देश भी नहीं कर पाए हैं। और भारत साइंस एंड इंजीनियरिंग की पीएचडी अवार्ड करने में भी पीछे नहीं रहा। दुनिया में तीसरा रैंक भारत को पीएचडी अवार्ड में करने में साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है। और हमारे इस क्षेत्र में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा भी करने वाले हैं। और इंडिया ने अपने मोबाइल सब्सक्रिप्शन पे भी एक बहुत बड़ी प्रगति देखी है। अगर आप देखेंगे नंबर्स किस तरह से बढ़ा है, इंटरनेट कनेक्शन जो 2014 में 250 मिलियन थे, वो बढ़कर 2022 में 900 मिलियन यानी कि 25 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो गए। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन 60 मिलियन से बढ़कर 810 मिलियन हो गए। ये दिखाता है कि भारत में इंटरनेट की क्रांति किस तेजी के साथ आ रही है और भारत के युवा और भारत का हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करके टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ रहा है। यही नहीं, आपदा के समय हम दुनिया पर निर्भर नहीं, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। तभी तो भारत ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन करने का काम किया, जो दुनिया के देश सोच भी नहीं सकते थे, भारत के लोगों ने करके दिखाया है। और सही माने में वसुधैव कुटुंबकम की अगर मैं बात करूं तो दुनिया को एक परिवार मानकर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही देश के लिए नहीं, 100 से ज्यादा देशों के लिए वैक्सीन देने का और दवाइयां देने का काम भी हमारे भारत ने ही किया है। तो प्रवासी भारतीयों को इस बात पर गर्व भी होना चाहिए। यही नहीं, हमारा जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसके मैजिकल नंबर्स भी $400 बिलियन से ज्यादा हो गए हैं। और यही नहीं, भारत का अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है, जो हम बात करें इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, वो आईएनएस विक्रांत भी हमने आजादी के अमृत काल में 75वें वर्ष में भारत को दिया है। स्पेस, डिफेंस और ड्रोन सेक्टर ये नई उम्मीदें लेकर भारत में उभर रहा है और नए नए क्षेत्र इसके माध्यम से खुल रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत ने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। और आत्मनिर्भर भारत के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी पूरा करने का काम किया। आपके बीच में ही यूथ अवार्डीज भी हमारे बीच में हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, स्पिरिट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप जब आए हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी युवाओं से जरूर मिलिए और उनके साथ देश को घूमने का प्रयास अवश्य कीजिए। आप जितना भारत घूमेंगे, भारत की विशेषताओं को भी जानेंगे, भारत की समस्याओं को भी जानेंगे और कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान करने में भी आप एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। Rather than taking more time, I'll end with a quote from the Honorable PM. He once remarked that when it comes to our diaspora, be it non-resident Indians or the persons of Indian origin, we don't look at the color of the passport, but only the blood relationship. हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते, खून का रिश्ता देखते हैं। और कहीं ना कहीं आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, ये खून का रिश्ता हमें एकजुट करता है, भारतीयता का रिश्ता हमें एकजुट करता है। And Indians, be it in India abroad, have always held their heads high
and hearts open to lead the world in the bold and bright future that awaits us. With these words, I invite you to innovate, invest, and initiate your ideas in India. So welcome to the Youth or Yuva Pravasi Bhartiya Divas. And once again, I just would like to remind you, you are going to explore this beautiful city of Indore, महाकाल लोक, ओंकारेश्वर मंदिर. आप भारत के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को देखिए ही, लेकिन रात को 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक इंदौर के सराफा बाजार में जाना मत भूलिए. अगर आप सराफा बाजार में गए बिना चले गए तो आपकी ये विजिट बिल्कुल अधूरी है. और अगर आप एक बार चले गए तो समझ लीजिए अगली बार इंदौर में, जहां साथ में लगते महाकाल लोक, ओंकारेश्वर मंदिर से बहुत सारे आकर्षण आपके लिए होंगे, उनमें से सराफा बाजार भी आपको बार बार निमंत्रण देगा. एक बार फिर आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत. जय भारत, जय हिंद. बोले भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को. नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में. मध्य प्रदेश सफलता के सोपान चल रहा है, नित्य नई विकास की गाथाएं लिख रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बड़ी श्रद्धा से, बड़े समर्पण भावना के साथ मध्य प्रदेश वासियों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं. हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें. कैसे हैं आप? ठीक से बताइए ना, कैसे हैं आप? इंदौर कैसा लगा? खुश हैं सब? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की. हमारे विदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर एस जयशंकर जी, मिस जेनेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए. हमारे यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिन्हें आप अभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अनुराग ठाकुर जी. राज्य मंत्री हमारे निशित प्रमाणिक जी, विदेश सचिव डॉक्टर आसफ सईद जी, सचिव युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सुश्री मीता राजीव लोचन जी, यहां उपस्थित भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री साथीगण और पूरे दुनिया से यहां पधारे हुए मेरे बहनों, मेरे भाइयों और भांजे और भांजियों, मैं मध्य प्रदेश वालों का मामा हूं तो आपका भी मामा ही हुआ. इंदौर में आपका हृदय से स्वागत. पर केवल मेरी तरफ से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है. और स्वागत केवल शब्दों में नहीं है, ये स्वागत आत्मीय है, ये स्वागत भावनाओं से है. और वो भावनाओं का प्रकटीकरण आप इंदौर की सड़कों पर देख रहे होंगे. विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर सजाया गया है, रंगोलियां बनाई गई है. केवल स्वागत द्वार नहीं बनाए, इंदौर की जनता ने पलक पौड़े आपके लिए बिछाए हैं. क्या इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था,
झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काहे को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहराएंगे। हर एक ललायत का हमारे घर ले चलो। सचमुच में आप सब आए, मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश है देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हैं हमारे दिल के टुकड़े। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, लेकिन भारत के ऋषियों ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी मूल मंत्र को आत्मसात करके केवल भारत नहीं, आज दुनिया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस है। मित्रों, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो है जो उन सपनों को साकार कर कर ही चैन की सांस लेता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वो शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और भारत के युवाओं ने दुनिया में सच में वो करके दिखाया है। कामयाबी हाथ की लकीरों से नहीं मिलती, कामयाबी माथे के पसीने से मिलती है। और वो सफलता के झंडे भारत के युवाओं ने गाड़े। दुनिया में जहां जहां गए एक अलग पहचान बनाई। और सचमुच में दुनिया के लगभग सभी देशों में अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठाने तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली। और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है। लगातार 6वीं बार नंबर 1 और मध्य प्रदेश की ओवरऑल नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो सारी चीजें भारत यहां बनाने लगा। डिजिटल इंडिया, तो दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट आज भारत में हो रहा है। स्किल इंडिया, यूथ स्किल हो गए। आज सचमुच में अनेकों क्षेत्रों में भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत। और
और आने वाले कल में भारत को ज्ञान शक्ति, अर्थ शक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है 2026 तक। तो अर्थ शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति बनाना है। इसके लिए जरूरी है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। और इसलिए जब मैं इनोवेशन की बात करता हूं, नवाचार, जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, सचमुच में तुम अद्भुत काम करोगे। नवाचार क्या है? जो विचार दिमाग में आए उसको जमीन पर उतारनी तो नवाचार है। कहते न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अभी साधारण घटना थी, लेकिन न्यूटन सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, तो जमीन पे क्यों गिरा? वो ऊपर क्यों नहीं गया? वो बीच में क्यों नहीं अटका? अब वो सोच रहे थे, उत्तर मिला नहीं, तो कहते हैं आने जाने वाले लोगों को उन्हें बुलाया और कहा एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा बताओ क्या? तो न्यूटन ने कहा हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। तो लोगों ने कहा जमीन पे नहीं गिरता तो कहां गिरता? वो ऊपर क्यों नहीं गया, आसमान में क्यों नहीं अटका? तो लोगों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गए कुछ। अरे जमाने से देखते चले आए, ऊपर से कोई फल टूटता तो नीचे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन सोचते रहे और अंत में उन्होंने खोज के निकाला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और इसलिए अगर कोई वस्तु टूटती है तो वो नीचे गिरती है। ये नवाचार है और भारत के नौजवान नवाचार कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन आइडिया पर्याप्त नहीं है। उसके लिए रोड मैप, उस रोड मैप पर चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी के विपरीत दिशा में तैरने का साहस, ये करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। और सचमुच में जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM, मास्टर कार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो केवल भारतीय नजर आएंगे। ये भारतीय मेधा और विश्वसनीयता है कि इन कंपनियों के डेवलपमेंट लैब से लेकर बोर्ड रूम तक भारतीय आसीन है। आज हमें गर्व होता सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, सुश्री लीना नायर, राज सुब्रमण्यम, CM वेंकटा कृष्णन, राजीव सूरी, इंदिरा नूई, अजय बांगा, कितने नाम हैं ऐसे, कितने नाम जिन्होंने सफलता के नए इतिहास रचने का काम किया है। और मित्रों, इनोवेशन अकेला नहीं है, अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। और टेक्नोलॉजी की बात अगर मैं कहूं तो अगर डाली पे पक्षी बैठा है और डाली कमजोर है फिर भी वो डाली पर बैठा है, तो इसलिए नहीं कि उसे डाली पर भरोसा है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा। और मित्रों, आज टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो भारत के प्रवासी युवाओं ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया है, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि यदि भारतीय ना हो तो कंपनियों का काम ही ठप हो जाए। और इसलिए ये जो दोनों विषय हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न केवल देश की प्रगति और विकास के लिए बल्कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए।
और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवा आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए। अभी अनुराग जी बता रहे थे 100 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और 4 स्टार्टअप्स को डेकाकॉर्न बनाया। ये इंदौर, अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ के नौजवानों ने प्रारंभ किए हैं और मध्य प्रदेश के गांव-गांव से नौजवान निकल रहे हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके। लगातार जो बातें अनुराग जी ने कही मैं दोहराना नहीं चाहता, लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है। मैं आज गर्व के साथ बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश की विकास दर करंट प्राइजेज के समय 19.76% है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज को लेके। यूथ पॉलिसी मध्य प्रदेश अब हम नहीं बनाने वाले हैं। अनेकों क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश को स्किल करना हो, ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में बन रहा है। हमारे आइडियाज को हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास मध्य प्रदेश में भी निरंतर जारी है। मैं एक बार फिर आप सबका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। और अनुराग जी ने कहा है सराफा जाना मत भूलना, लेकिन 56 दुकानें भी जरूर जाना। अद्भुत है इंदौर और सचमुच में अद्भुत है मध्य प्रदेश। धन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, यहां महाकाल महालोक है। जाना, लेकिन शाम के समय जरूर जाना। रात में महाकाल महाराज की छटा अद्भुत होती है। यहां ओमकारेश्वर है, 2 ज्योतिर्लिंग, 3 वर्ल्ड हेरिटेज, 11 टाइगर पार्क है हमारे। और टाइगर पार्क भी ऐसे कि कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है। इस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जब कोई इनोवेटिव आइडिया आए और आपको लगे कि मध्य प्रदेश में जमीन को उतारना है, तो मामा को याद कर लेना। आपका साथ देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सबका इस धरती पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए, मध्य प्रदेश धन्य हो गया। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और अंत में केवल एक बात कह के, ये नहीं है नहीं ये हाथ केवल हाथ मलने के लिए, तू इन्हें मुट्ठी बना दुनिया बदलने के लिए। भारत भी बदल रहा है, दुनिया भी हम बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश में आप इस वक्त हैं, सबसे स्वच्छ शहर भारत का इंदौर में। We feel privileged with the august presence of the Honourable Member of Parliament Australia, Ms. Janita Mascarenhas. May I request you, Madam, to kindly address us. जोरदार तालियों से स्वागत हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर। Namaste and Dhanyavad. I would like to acknowledge the External Affairs Minister, Dr. J. Shankar, for his invitation to present today. I feel very privileged to be here. I acknowledge the Honourable Shri Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister, Madhya Pradesh, for hosting us in this beautiful state. I'd like to thank the Minister for Youth Affairs, the Honourable Shri Anurag Singh Thakur. I thank him for the opportunity to be here to address the youth plenary session.
And to His Excellency, Prime Minister Narendra Modi, it is a great honour to be back here in incredible India. Australia's relationship has never been closer. The Indian community is our fastest growing diaspora, and our nations have shared interests, challenges, perspectives, and a strong belief in democracy. I know that my Australian Prime Minister, the Honourable Anthony Albanese, is looking forward to visiting India later this year. India, for me, is a kaleidoscope of colours, culture and senses. I was 15 years old when I first travelled to India. Honestly, I felt trepidatious and was unsure what to expect. There were several impressions that India gave me. The first, my extended family had so much love to give, even though I lived overseas. We are close, and my Indian cousin Noel has travelled to join me here. My dad has an incredible work ethic, but then I understood that this is a shared trait of my whole extended family, but really the Indian diaspora. There is so much vibrancy and colour here, whether that be the clothes we wear or the food we eat. Finally, I remember the kindness strangers gave me just because of my grandmother's reputation for Lisa Dad as a kind and giving woman. India is a diverse country. The sleepy backwaters of Kerala represent an aquatic paradise. The desert skies of Gujarat offer glittering star-spangled skies. Or here in Indore, the street food here is a flavour sensation, as I learnt last night. And for me as a Goan, it's famous for its New Year Eve parties, but for Goans, we start the New Year by going to midnight mass. India's diversity is what makes this country seem like it's contradictory, but rather, I like to think of it as a country that has duality, two opposite parts that coexist. I think it's this duality that helps the Indian diaspora be so successful. Mixing old ideas is not new or unfamiliar concept to India. India is arguably one of the most successful nations who practices ancient religions while embracing new technologies and boasting cities like Bengaluru and its own thriving movie industry. Duality happens on a national level, but I think it happens on an individual level too. Minister Thakur showed this by speaking in both Hindi and English seamlessly. As we, the Indian diaspora, seek to do great things around the world, we fall in love with other countries and create new lives and worlds for our family. We then get to blend the best aspects of Indian culture with the best aspects of another country, and essentially we create a third culture. Following this, I'd like to talk about some members of the Australian Indian diaspora who are at the forefront of innovation and new technologies. Ajay Prakash had the vision to empower 1 billion people to discover meaningful work through his education startup called Entry Level. He is one of Australia's top 100 innovators and is a Forbes Under 30 entrepreneur. AJ's platform delivers short, intensive, affordable programs with professional mentors from companies including Atlassian, Wise and StartMate. Recognising that almost 200 million jobs were lost during 2020, largely due to COVID, AJ wanted to think about ways to reskill people. AJ's ambitious goal is to prevent mass unemployment by 2030. The thing that I find particularly refreshing about AJ is that he openly talks about failing. Culturally, this is something that I think many of us would struggle with. However, smart entrepreneurial culture has taught me that it's smart to fail fast and fail small to crack the
open the next innovation. Then there's Veena Shawajala, who's a material scientist, engineer and inventor. She's the recipient of the Pravasi Bhartiya Samman. She is passionate about waste. She was talking about green steel production before it was cool. She thought that it would be smart to use end-of-life tyres to replace coal and coke in steel making. The Pulitzer Prize-winning author Charles Duhigg told us that innovation happens by mixing old ideas in new ways. Well, Veena was literally doing this by diverting almost 200 million tyres from landfill and then using them in the furnace during steel production. This reduces costs and reduces greenhouse gas emissions. Talking about net zero emissions, that's quite an accepted term worldwide. In time, we will talk about net zero waste, aka the circular economy. So for manufacturers in the audience, I ask, can your products be repaired, or even better, can they be upgraded or retrofitted? And once your product reaches the end of its life, can it be recycled or repurposed? The final person I'll talk about is an engineer from Australia who has worked in climate change the last 12 years. Her dad, Jose, an Indian metal worker, wanted to migrate from Kenya to Australia. Australia had a skills shortage. However, the Australian embassy explained to Jose that he had the right skills but had the wrong colour skin. Back then, the White Australia policy existed. Eventually, successive Australian governments dismantled this policy and Jose migrated to Australia with his wife and daughter. They lived in a multicultural mining town called Kambalda, where all cultures were celebrated. His youngest daughter was born in Australia and studied engineering and worked on the mines. She had a passionate and worked in climate change action for 12 years. She helped large companies reduce their carbon footprint. She loved her work and became the team leader. The policy environment was tough. In Western Australia, there are currently floods in the north, while in the south there are bushfire warnings. I'm sure that we would all agree that climate change is wreaking havoc across the world. Action by the Parliament was required. She was asked if she would run in the federal election to become a Member of Parliament. She was a mum of a 2- and a 5-year-old. Federal politicians in Australia are required to be in Canberra, the capital, for almost half the year. The person I describe above is me. This is where I will share that my husband is my biggest supporter. He believed that I could win and make a positive difference in Australia. But equally, he was not daunted on needing to lead parent alone for half the year. Having a supportive partner is invaluable. When deciding on whether to run or not, I reflected on my family's history and recognised that politics can be personal, powerful and transformative. My Australian story would not be possible if it wasn't for the Australian government wanting to become the world's most successful multicultural nation. And in the end, I decided to do what mattered. Last year, Australia voted to change the government. So how on earth did I get elected up? Well, we all know that Indians in the Indian diaspora have a tremendous work ethic. And as the Minister explained before, we have an unflinching spirit. My team and I knocked on 45,000 doors. For the first time in 5 terms, I won the seat of Swan. I became the first woman and the first person of colour to be elected to that seat in its 101 history. I can't tell you why I definitively won. One strong factor is the character of the new Australian Prime Minister, Anthony Albanese. Authentic leadership matters. But I also think that my electorate wanted to have more diversity in Parliament, not just gender or ethnic background, but my skill set too.
My electorate loved that I am a working mum and engineer. I want to leave you with this thought. The Indian diaspora combines two cultures to create a third culture with the best of both worlds. I encourage you to do what matters. And going further, you should think about your legacy. I reflect on my grandmother's, Felicidad's, tremendous legacy. She passed away 29 years ago yesterday, and even though I never met her, her presence was always felt strongly, long after she left our earth. So I'd like to ask you, what will your legacy be? Thank you so much, madam. Thank you so much. बाहरी देशों या विश्व के किसी बड़े मंच पर हमारे भारत देश के बारे में पेचीदा सवालों के सटीक तथा निरुत्तर कर देने वाले जवाब यदि आप सुने तो बेशक वो आवाज़ हमारे विदेश मंत्री अनन्य राष्ट्रभक्त माननीय डॉक्टर एस जयशंकर जी की ही होती है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में सफल विदेश नीति को अंजाम दे रहे हैं. May I request Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar ji to kindly address us and show us the way forward. Respected Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Chauhan Singh Ji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur Ji, Guest of Honor, Ms. Zaneta Mascarenhas, Member of Parliament, Australia, my ministerial colleagues in the Foreign Ministry, Shri Muralidharan Ji, Srimati Meenakshi Lekhi Ji, Dr. Ranjan Ji, Minister of State for Youth Affairs, Shri Nishit Pramanik Ji, Ministers of the Madhya Pradesh government, Secretary Asif Said, who deals with diaspora affairs, Secretary Neeta Rajiv Lochan, friends, my youthful delegates from India and abroad. Let me first of all extend my warmest greetings to all of you. My welcome at the first event of the 17th Pravasi Bhartiya Divas convention, which is the Youth Pravasi Bhartiya Divas. We all know why we are here. We are here because in the I would say memorable words of the Prime Minister at a legendary diaspora event, he said that हमारा तो खून का रिश्ता है, पासपोर्ट का नहीं. And that one phrase, I think, captures the entire complexity of a relationship that we have today with 34 million people of Indian origin and non-resident Indians abroad. And that is what brings us here every 2 years for this convention. So even as we meet here, there are many who are not here with us today, but who are watching it, who will take heart from what we are doing, who will be enthused by the renewal of this relationship. And so that is a larger emotion which will definitely be in all our minds over the next 3 days. We have also gathered here as India marks 75 years of independence and prepares for the next 25 years ahead. This is an era where we are increasingly confident
about our prospects, and when we seek to connect more closely with the Indian community, with the international community. And that is why I'm particularly glad to see that the guest of honor today is from our Quad partner, our Indo-Pacific partner, Australia. Today's session is devoted to assessing the progress in connecting with the diaspora, and obviously with a special focus on the role and contribution of the youth. Now, before I come to the subject, I think I would be remiss if I did not thank the Honorable Chief Minister, Shivraj Ji, and the government of Madhya Pradesh, his whole team, because people have spoken about Indore as the cleanest city. I think all of you already know it is the city with the largest heart, the warmest feeling, the greatest hospitality, and I have not yet been to Sarafa Bazaar, but I went to Chappan Dukan yesterday. And I think we street, which is promoted particularly by activities like the Pravasi Bhartiya Divas. This relationship was very much in evidence amidst the challenges of the COVID pandemic. On its part, the Government of India undertook the Vande Bharat mission and the Vaccine Maitri initiative, which were focused significantly on our diaspora-centered partners. We recognize too the tremendous response that we got from the PIO NRI community during the most difficult moments of our own COVID experience. So as we meet today, I can truly say that our bonds have become even stronger as a result of all the trials and tribulations that we went through during the COVID period. Now, those of you who are coming to India after a gap would surely notice the many changes that have taken place, I would say in the last 8 years, but especially in the last 3 years. Notable among them is the extraordinary scale of digital delivery that has made possible access to social benefits, and that too without leakage. Equally evident is the improved health infrastructure, and indeed the greater awareness and expectations on that score. You would also see enormous infrastructure activity. In fact, as you come in from the airport, you can see the construction which is going on. And these are propelled by the Prime Minister's Gati Shakti initiative. But most of all, you would sense the optimism in our society and the highlighting of the role of the youth. Whether it is startups or sports, whether it is technology usage or tourism, the energies of young India are increasingly visible. This is what has led us to define the theme for this year's Youth PBD. The younger generations are also very much in the forefront of connecting India to the world. They do so not only through their activities at home, but by studying, working, and traveling abroad. Our endeavor is therefore to maximize support for them and to ensure that they realize the benefits and achievements that are due to them. We strive to create a better workplace, a more secure traveling experience, and a non-discriminatory treatment abroad. It could take the form of migration and mobility partnerships, as we have done recently with Germany, Denmark, Portugal, France, and UK, just to give you some examples, or a working holiday program, as we have just signed with Austria,
or the more liberal working conditions that were being extended by the Australian government, or for that matter, more predictable and liberal visa and work provisions in some other nations. It may be the services and support provided by the Indian Community Welfare Fund, or even something as simple but as important as the swift replacement of a lost passport, and the more efficient rendering of consular services. The redressal of grievances in a transparent manner through online mechanisms like Madad is by now well established. The biggest difference, however, is the higher standing of India and the stronger relationship that we have established with virtually every nation that hosts our community. This is reflected in your stature and standing in these societies. The identity of a diaspora is very much derived from how closely it is connected to its roots. Here too, our efforts have been to encourage easier exposure to Indian culture and traditions abroad. Many of our embassies, in fact I think most of them today, now offer yoga, dance and music classes. We ask them also to support and facilitate community functions and collective activities. It is a matter of pride for us that centers of faith are growing abroad. And I think the one in Abu Dhabi has attracted particular attention. That centers of faith are going abroad because they also serve to inculcate values, promote culture, and nurture traditions. The youth living abroad today, therefore, has many more opportunities than before to stay connected. Having said that, we believe that this is never enough by itself. There is always room for improvement in schemes like the Know India program that we intend to expand, the Bharat Ko Janiye quiz, and the scholarship program for diaspora children. It is also our expectation that the new education policy will create more pathways for a deeper involvement of the diaspora, and you will be hearing from my colleague Sri Dharmendra Pradhan ji about this in the coming days. Within the country, Prime Minister Narendra Modi has urged us all to focus on the Amrit Kaal, the period leading up to a century of independence. It is important that the Indian community abroad also does the same. They would be justified in asking themselves, how can they make a difference to India's future? In the past, the answers may have been more in the realm of resources and opportunities. Today, it is in the era of a knowledge economy. It is much more in a world of technology, of ideas, and of innovation. So my message to you today is that India is changing in front of our eyes, and at a pace and manner that is unprecedented. We have a leadership that is providing both the vision and the guidance to emerge as a leading power in the days ahead. I'm very confident that the Indian youth at home and abroad will take up the challenge and help to propel this country to greater heights. Thank you, and Jai Hind. Thank you, sir, for your very insightful and inspiring speech. Thank you so much. May I now call upon Ms. Meeta Rajiv Lochan, Secretary, Department of Youth Affairs, to kindly propose vote of thanks. कृपया आभार प्रकट करें. Friends, first of all, I would like to thank Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan ji, for hosting the
Yuva Pravasi Bhartiya Divas in such a very wonderful way. He is the most dynamic Chief Minister. We only have to go out on the streets of Indore to see the impact of the work done by him and his team. Thank you, sir, for making this such a memorable event and for making everyone here feel so welcome and so comfortable in the highest traditions of Indian hospitality. Next, I would like to thank Honorable Union Affairs Minister for Youth Affairs and Sports, Anurag Singh Thakur sir, for his constant guidance and support. Sir's dynamism and energy is very visible in the way that the landscape of youth affairs and sports in India has changed. If Indian athletes have received so many accolades and have won so many prizes in the recent past, that has everything to do with his energy and his constant guidance and support. Thank you, sir. It is an absolute honor, friends, today to have with us Honorable External Affairs Minister Dr. Subramaniam Jaishankar. Dr. Jaishankar has changed the narrative of Indian foreign policy. If countries across the world look up to India today, that has everything to do with him. We as Indians feel so proud, sir, when we hear you speak, and it is wonderful to have you with us today. All those present would benefit from your enormous experience and wisdom. Very grateful thanks to you. I would also like to thank Honorable Minister of State, Shri Nishit Pramanikji, for his guidance and support. Thank you to Ms. Zaneta Mascarenhas, Member of Parliament from Australia, for coming here and being with us and sharing her experiences on this occasion. Thank you, Madam. I would also like to thank Secretary, Ministry of External Affairs, Dr. Asaf Saeed, and the entire contingent of the MEA for helping us to organize this function. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदया. Thank you so much all the dignitaries, esteemed dignitaries on the dais. आपका बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए. Thank you, Honorable Ms. Janita Mascarenhas and Honorable External Affairs Minister and all the dignitaries on the dais, Shri Anurag Singh Thakur जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए. और आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप सभी से निवेदन है कि जो हमारा प्लीनरी सेशन है 5 मिनट के बाद शुरू होने जा रहा है. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू काइंडली बी सीटेड because we are going to start our plenary session after 5 minutes from now. इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज पे हमारा